So we have till now studied writing textual data into a file. So text we know how we had tried writing textual data into a file on this file, correct? And then we how to read that data, then how to read that data, and then how to count the number of characters, lines, words, blah blah blah. All those applications we have made. Now today we will learn how to read binary data. So binary data is structure. What is structure? Binary data. So now if I want to store one record of a student in a file, and I want to read and write, store this data into a file as well as, so this is binary data. Binary data is not human readable. It is byte code. What is it? You cannot interpret binary data. Okay, so even this goes for Java also. So if you see a Java file, you have one Java text file, and you have, after compiling, it becomes a byte code. That is only read by the machine. Humans cannot interpret that file. So I'll show you what I mean by that. So if I have any of my, similarly I was discussing this with the SQL batch, where your data gets stored actually physically on the hard disk. If you are doing SQL queries, if you are writing a SQL query, where is this data physically, in which file? So this data is then stored in a byte format into some of these files. So if I go to the Ora data XC, and these are all your byte files. So if I open any of these files, you as a user will not be able to interpret it. This is all machine can read this. These are all machine instructions. Okay, so this is called as binary data. So the data which I will write into the file, this data will be stored in the file. But if you open the file, you will see it in this format. Some part you will see, okay, this is Jabber, this is Center, this is Oxford. Some part you will be able to interpret, but most of it you also will not interpret, because this is binary data. So okay, so this data, if it's stored in the file, will you be able to read it? Then who can read it? Machine. Then machine will have to ask the machine to read it for you. So you write it into a file, it will be encrypted into binary data, and then you will call the write function to read it. So machine can able to read it, you cannot read it as a human being. Okay. So for that we have two functions. We have write and read function. What we have? Write function and the read function. So write is to write the binary data, and read is to read the binary data. Okay, first thing first, if I want to write data of this sort, what do I have to make? A structure. So let me make a structure. So struct student, okay, and integer, roll number, character, name of 10, and float percentage. Okay. Then what do? I go to void main, and I make a struct student s1. So let's first write one object at a time. Let's write one object, right? Let's read and write one object, then we will read and write multiple objects. So let me directly go to your compiler. So I open a compiler. This is in C mode. stdio. Tell me now what? Struct student. Okay. And then integer, roll number, character, name of 10, and float percentage, and structure. Done. Okay. If you want to go type def, you can do a type def if you want to. Else, if you don't want to, don't do it. Okay. I am not a big fan of int main, so I always stick to void main. Struct student s1. So now, if I want to accept the data, what do I say? Enter roll number, name, and percentage,
and what do I do? Scanf percentage B, percentage S and percentage F. How do I do it? And S1 dot roll number, comma, no and S1 dot name and S1 dot percentage, right? ये हो गया. अब इसको मुझे डिस्प्ले करना है तो printf on a new line, roll number is percentage D. From where I'm getting that? S1 dot roll number, right? Chota r, and so on and so forth, correct? And name is percentage S and S1 dot, and percentage is percentage F, 0.2F कर देते हैं, which is not correct. So accept and display. And if I run this code, so whatever data I will enter over here, on each run I will be losing this data, correct? So whenever I run the code, that data will be lost. So whenever I do a new run, I will lose that data. Okay. Accept and display, and the data has been lost. Now what do I want to do? I want to make it persistent. Take this data and store it in a file. So for file, what do I need to add extra? Hash include std lib dot h, correct? And now for file handling, what do we need now? We need a pointer, right? So how do I do that? Yes, tell me, prompt me, yes, please. At time I don't remember the syntaxes. File, I make a pointer. We are doing what? Reading or writing? So I call it as what? fw. And then what do I do? Tell me. F open. Which file? What is the syntax? Yes, which file? Okay, let's say I want to write in my students. I want to write in my students .txt. Next what? In which mode? Write mode, right? And then what do I do? Make it point to whom? On the LHS fw, right? This is the syntax, right? Fw is now making. Now if fw is null means it will create it. So no need to check for that. So now what do I have to write in fw? This structure after acceptance, right? Okay, so what is the syntax for that? The syntax for that is you have to call the write function. What will I call? fwrite function. What is the function name? fwrite. So first thing first, what are you storing in that file? Which object are you storing? S1. So you will say S1. Then what is the size of this S1? One integer 4 bytes, one character 1 byte, 10 characters 10 byte, one float 4 bytes. So 4 plus 10 plus 4, how much? 18. So I will say 18. Is there any other easier standard way? Size of? Yes or no? As of S1? Okay. And now how many objects am I storing? So this information now is into one object, correct? This information now is into one object, correct? And this one object, what is the size of this rectangle? Tell me. This is what you have to understand. What is the size of this rectangle? 18. So what I mention over here will give me
18, and of 18 bytes, how many quantity? Of 18 bytes, how many quantity? 18 बाइट के कितने स्टोर करने वाला हूँ मैं? रेक्टेंगल कितने की है ये? 18 बाइट की है ना? तो 18 बाइट के कितने क्वांटिटी है मेरे पास? ये क्वांटिटी है ना? तो वो थर्ड इधर आता, थर्ड आर्गुमेंट आता। मैं स्टोर कर रहा हूँ S1, पहले वो ऑब्जेक्ट जो आप स्टोर कर रहे हैं, फिर उसका साइज कितना हो गया उसका? 18 हो गया। अब 18 साइज के आप कितनी चीजें स्टोर कर रहे हैं? यूनिट कॉस्ट और प्राइस। तो एक फोन 30,000 का, और मैं एक फोन खरीद रहा, तो मैं एक पीस ले रहा ना, वहाँ 10 फोन रखे हुए, तो टोटल माल कितने का है? 3 लाख का माल है। तो मैं बोलूँ मेरे पास 30,000 है, तो मैं क्या हो रहा, 30,000 का मुझे एक फोन दे। अगर मैं बोलता ये ले 3 लाख रुपए, तो मैं कितने फोन लेता? 10 देता। तो अगर मैं यहाँ बोलता कि मैं स्टोर कर रहा हूँ 36 बाइट का डेटा, तो उसमें कितने आते हैं? दो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आते ना। तो मैंने अभी क्या बोला, साइज ऑफ S1 वो कितना है? 18। तो 18 बाइट्स के कितने इंफॉर्मेशन में? एक ही। समझ में आ रहा है? और कहाँ डाल रहे हैं अपन इसको? पॉइंटर कौन है? हम देते हैं स्ट्रीम को ना, वो डालता है फाइल में। तो अपन ने एक बार mystudent.txt को FW लगा दिया, अब ये फाइल से अपना कोई काम धंधा नहीं है। तो हम कहाँ लिख रहे हैं? कोई शक? तो ये कंटेंट क्या हो गया? अभी क्या हो गया? फाइल में सेव हो गया। ठीक है, तो मुझे दिखा भी दिया उसने और फाइल में सेव भी कर दिया। कोई शक? मुझे दिखा भी दिया और फाइल में सेव कर दिया, रन करते हो। ठीक है, तो अभी तुम लोग काय खेलें। इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। Okay, we have to type cast it, I guess. We have to do what? Yeah, no, it's good. So ये जो S1 है, ये किस टाइप का है? Okay, टाइप इसका structure है ना? टाइप इसका S1 नहीं, टाइप क्या है इसका? Okay, sorry. हम जो चीज़ पास करते हैं ना, उसका एड्रेस पास करते हैं। क्या पास करते हैं हम? ओरिजिनल चीज़ नहीं पाते, क्या पास करते हैं उसका? तो क्या पास करा? एंड S1, इसका साइज क्या है? जो S1 का साइज है। ठीक है, और उसके कितने क्वांटिटी पास किया अपन ने? 1, और ये सेव हो गया। लेट्स चेक दैट आउट। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट नाउ। सो नाउ इफ आई वांट टू एंटर विराट कोहलीज डेटा, तो 18 रोल नंबर ना, और 89.9। तो ये फाइल में जाके सेव हो गया। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? फाइल बन गई किस नाम से? और डेटा आगे स्टोर हो गया उसके अंदर। और वो डेटा ऐसा क्यों दिख रहा है मेरे को? ये बाइनरी डेटा है। ठीक है, और ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, और ये मुझे दिखा भी रहा है। अब मुझे इसको रीड करना है। ठीक है, तो अभी मैंने देखो क्या किया। मैंने क्या किया समझो उसको। तो ये जो मेरा डेटा है, ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये जो मेरा डेटा मैंने सेव किया, कौन से ऑब्जेक्ट में था वो? S1 में ना। और क्या था उसमें? 18, विराट, और जो भी था रिलेशन 90.9। ठीक है, अब ये मैंने फाइल में सेव कर दिया। तो फाइल में जब वो गया, जो भी फाइल का नाम था mystudent.list.txt जो भी, तो उसमें वो गया, क्योंकि बाइनरी डेटा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो वो जो भी रहेगा, टेक्स्ट थोड़ा बहुत दिख गया मुझे, बाकी वो भी दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है ना? और मैंने चूँकि S1 से डिस्प्ले किया था, तो मुझे डिस्प्ले हो गया। मैंने S1 से डिस्प्ले किया था। अब मुझे इसको अगर रीड करना है, तो मैं एक प्लेन ऑब्जेक्ट लेता हूँ, दूसरा वाला S2। क्या लेता हूँ मैं? S2 भी किस टाइप का होगा? तो उसमें भी क्या क्या होंगे? रोल नंबर होगा, नेम और परसेंटेज। और मैं अभी ये इंफॉर्मेशन को इससे रीड करता हूँ। इसको किससे रीड करता हूँ मैं?
और फिर S2 से डिस्प्ले करता हूँ तो मुझे दिखा देगा। S1 से डिस्प्ले तो कर रहा हूँ तो सर वो तो आपने एक्सेप्ट किए हैं तो वो तो डिस्प्ले करेगा ही, तो वो तो इसमें तो कोई लॉजिक जरूरत भी, इसकी जरूरत भी नहीं थी आपको वैसे भी। ठीक है, इसको आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या करा, 18 विराट और 90.9 लिया, डाल दिया फाइल में। अब मैं डिस्प्ले S1 से नहीं करूँगा, डिस्प्ले कैसे करूँगा, तो मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। कहाँ से, S2, ये तो प्लेन ऑब्जेक्ट है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब अपन रीड करेंगे तो उसके लिए fwrite की जगह fread, fwrite की जगह fread, ठीक है। तो अभी मैं किस में रीड कर रहा हूँ, तो उसका एड्रेस देगा S2। साइज कितना है उसका, अरे तुम लोग गरीब लोग हैं, तुम लोग पॉइंटर दो ना, रीड कैसे करेंगे बगैर इसके, स्टार FR ना, तो अभी FR कहाँ जोड़ने का, इसी फाइल में ना, F open this file in which mode now, रीड मोड, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, अब यहाँ आप FR का इफ लगा सकते हैं, ठीक है। FR नहीं है तो वो अपने को मालूम है कि रहेगा ही, अपन ने खुद तो कर रहे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रीड करूँगा किसमें, S2 में, कितने बाइट्स, साइज ऑफ S2 S1 दोनों बराबर ही है ना, एक ही चीज़ है। और कितने बाइट ले रहा हूँ, 18 का एक, और फिर कहाँ से डालूंगा उसको मैं, तो अब मेरे S2 में डेटा आ गया। अब ये जो डिस्प्ले अगर मैं S2 से करूँ और वही इन्फॉर्मेशन आ जाए तो अपन जीत गए। चलो अभी सर दोनों का अनकाउंट कर देते हैं, अगर दोनों इन्फॉर्मेशन मैच हो गई तो आपका काम सक्सेस हो गया। अब यहाँ से S2 कर देना, आपने क्या कर देना है इसको, तो आपने एक्सेप्ट करके डिस्प्ले किया तभी वही दिखाया, फाइल में वो डाला आपने, और फिर फाइल से फेच करके S2 में लिए, S2 से भी वो दिखाया, तो आपका काम हो गया। यस, नो, मे बी, ओके। So if I put over here printf copied to file, okay, and where will I put that, after the write, सही है। और फिर हम लोग रीड कर लिए और रीड करके डिस्प्ले कर दिए, कम से कम, सही है। तो अब अगर दोनों डेटा सेम है, मतलब अपना प्रोग्राम बाइनरी डेटा रीड कर पा रहा है और दिखा रहा है अपने को, दिखाएगा तो क्या दिखाएगा, विल इट शो मी डॉलर्स एंड हैशेस, टू डिस्प्ले द एक्चुअल डेटा। लेट्स चेक इट आउट, रन किया, बोलो भाई, लेट्स चेक अपने क्लास का डेटा। यस, रोल नंबर 221, ठीक है। एलिस ले लेता हूँ, तो यार ये बैक स्पेस होता ना, तकलीफ होती है उससे, बैक स्पेस मत करा करो, ये स्ट्रिंग लेते हो, वो भी कैरेक्टर ले लेता हूँ उसको। 221, ठीक है। एलिस नोट हुआ परसेंटेज, सी कीजिएगा ना, सी कीजिए 78.6, ठीक है। 6 का चला गया, वही ले यार, spoils the entire recording, okay. 221 Alice and 78.5. Why is it not taking the decimal part? Why is it not taking the decimal part when I tell it to enter? 101 Alice and 78.5. So here it is storing, but while fetching, it is fetching me null data. So that is a problem. So how do I get rid of that? Okay, I should have opened it in read binary, right? File mode was write binary and, okay, so try to open them in read and write binary. Now let's check it out. 101 Ben and 78.7. Okay, still not fetching the data as per expectation, even though I am putting them in the binary. Okay, so let's try. Once I have written the
file, then I should close that pointer which is pointed to this file. So let me close, okay, which file? fw, right? So I can open new. Let's try this also out. What is the function name? Is it fclose? What is the function to close the file? fclose, right? I have closed this function. Now let's try to see 101 Alice and 90.8. And now here you go. fclose, you have to fclose. See. Sorry, my bad. So this is what we were missing. So we were pointing two pointers to the same file. That's why we were not able to do. Now see this code. I have fw and fr. I make the fw point to this file in write binary mode. I'll be getting a structure. I make two structure objects S1, S2. Take the data and store it in the S1. And then what I say, write, okay, this object to sizes of this quantity is 1 into this fw. So write it to this file, and then I will say file copied. Then if I want to, then I'll close that pointer, which is thrown out to that file. No pointer is pointing. Then I will make a new pointer point to that file, but in read binary mode. And I will read the content of that file into the S2 object. Size of S2, one quantity, and from fr. Now that same content has come into F2, and now I will display from F2, S2. So here I displayed from S1, file copied, and I display from S2. Is that making sense? Okay, what if I want to write multiple objects then? हाँ, read write भी कर रहा है, पर बेटर है कि वो एक मोड अपने समझ में आ गया. R D एक अलग मोड है. R फर्स्ट मोड, W सेकंड मोड, RB थर्ड मोड, WB फोर्थ मोड. तो ये चार टाइप के मोड हो गए. हाँ, एक फाइल पे, हाँ, वो इसके लिए वो इशू आ रहा था, तो फिर क्लोज करके आप चालू करें. हाँ, बेटर है, वो अच्छा है. तो इसके लिए इसको पहले क्लोज कर दो ताकि दूसरा उसको पॉइंट कर सके. ठीक है. Now if I want to write an entire object, now if I want to write an entire array, okay, so what I'll do is, to this I will say, let's say a batch of students. Let me give a batch of size 3. So now if I want a batch of size 3, what will I do? What will be the for loop? What will be the for loop, guys? I equals to 0, I less than 3, and I plus plus, correct? And then we will say enter roll number, name and student, and we'll put it where? In batch of I, correct? Batch of I dot roll number, batch of I dot name, and batch of I dot percentage. Put a and over here, don't put the and for the string. Is that making sense to you all? So I printf that and I store that. Let's hold this for now. So if I want to display it, how will I display it? I equals to 0, I less than 3, I plus plus, and let's paste this. Rather we can paste this, right? And we can use this all in the printf. Printf on a new line with a space in between each of them. Remove the and remove the and. Is that making sense? Yes. Okay. So accept and display is done. Now what do I do now? I write this entire what? Array. So array is by default reference type, so no need to give the and. So I just write what? I am writing the batch. Then now what do I give size of? So if I give size of struct student, if I give size of, now what is the size of the batch?
Size of batch 18 into 3 is how much? 54. 54, right? Now see, this is what you have to understand. So if I give size of struct student, how much? 18. So like this, how many? 3. So here I will give 3. So of 18 bytes, 3. Okay. If I would directly give over here struct size of batch, what is size of the array now? 54. So now there I will give 1. So here I will give what? Got the difference? What, this is what I wanted to explain. So quantity, size and quantity. So what you want to follow? This is good. Batch. So always keep this as 1 only. Size, just this variable and the size of that same variable. The batch, size of batch, 1 quantity, and it gets copied, and I close this pointer. Then I read this file in read binary mode, and I take it in the, so I will take it in read batch and write batch. I will have 2 arrays. I will have 2 arrays. So this is the R batch, W batch and R batch. Okay. So I am storing them in which initially W batch, right? W batch and W batch. And then we will read it from where? Okay, so I will display it from W batch and W batch, and I will copy W batch and size of W batch, correct? And copy it. Now what will I do? Read it where? R batch, size of R batch, 1 quantity and FR, correct? And now whatever has been displayed from here, we can display the same using the R batch, correct? Who is understanding this, what we are trying to do? So all that information which was stored in the W batch, I have stored in the file, and then I am reading from the file and putting it in the read batch and displaying from there. Okay, let's try to run it. I was not declared. Okay, so now I want records of 3 students. So I say 101 Alice. There was some problem with the turbo C. So now it's working fine. 102 Ben and 88.5. 103 Chris and 98.5. Okay, I accept them, display them, copy it to the file. The file has 3 elements, and then I fetch from the file and display it also. Is that making sense? Is that working? So this is how you can read and write multiple data from the file. Okay, so you can read and write multiple data. So you can read it all at once and then process it like you normally do. Clear? Understood? Single object, multiple object, all good?